Assalamu alaikum students. Welcome to the 22nd lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. Today we will cover a new topic of AI constraint specification problem. So what is the constraint specific problem? So just look at this slide. That CSP search algorithm take advantage of the structure of states and use general purpose rather than problem specific heuristic to enable the solution of complex problems. So in our previous lecture we always try to solve our complex problem by using the by using these problem specific heuristic values, because किस तरह से कि हमारा जो होता था वो ये होता था कि हमने गोल फाइंड करना है, हमेशा गोल की तरह का ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम होती थी हम उसी के स्पेसिफिक जो होता था हेरिस्टिक वैल्यू हम यूज करते थे. सो इन CSP वी विल यूज द जनरल पर्पस वैल्यूज रादर देन जो हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे, जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे वो जनरल पर्पस होंगी. So main idea, what is the main idea of constraint specific problem? The main idea to eliminate the large portion of search space. So हम क्या करेंगे इसके थ्रू, हम large हमारा जो portion होता है उसको search space का, search space, what is the search space? Search space all possible paths from initial state to root state or any other state. So हमारा जो जितनी भी states हमारी root state से generate होती हैं as a whole, पूरा tree वो हमारी search space होती है. The main idea is to eliminate the large portion of the search space at once by identifying the variable value combinations that violate the constraint. So मैं यहाँ पे कुछ रिव्यू भी करूँगा यहाँ पे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को भी पढ़ते हैं कि किस तरह से how can we eliminate our large portion of search space. मीन कि इसके अंदर हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऐसी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि उसका जो टाइम होगा वो कम से कम लगेगा, या उसकी स्टेट्स जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे. सो ड्यूरिंग दी प्रीवियस लेक्चर्स जिस तरह से हमने AI को स्टार्ट किया था, वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सर्च मेथड. सो हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो हम कॉमन हम यूज़ करते हैं सर्च मेथडोलॉजी, हम उनको एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट द अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड्स BFS, DFS एंड DFID. देन वी talked about that we move towards the informed search, and we talked about the concept that if we have a tree with branching factor 10 and the depth 100, so how much time will require to solve that tree, to traverse that tree. तो हमने देखा था कि उसको सालों लग जाएंगे लेकिन उसको हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते थे. सो दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड्स द इन्फॉर्म सर्च. देन वी टॉक्ड अबाउट दी कि हमारे पास क्या है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कहे कि हमें मुझे जस्ट गोल दे दें बजाय इसके कि पूरा सर्च स्पेस दें या आप पूरा पाथ दें. तो इन्फिनिट अगर सर्च स्पेस आ जाए तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम लोकल सर्च की मेथड की बात करते थे. देन वी मूव टुवर्ड्स द मिन मैक्स एल्गोरिथम, तो गेम ट्री, एंड वी टॉक्ड अबाउट द min-max algorithm in game trees, adversarial search in min-max algorithm that explore the all possible nodes, all nodes of that tree. So हम क्या करते थे कि हमने कहा था कि हम सारी की सारी नोड्स को हम ट्रैवर्स नहीं करना चाहते. सो हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जो कि क्या करे, कुछ ब्रांचेस को प्रून कर दे. सो हमने देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम दैट एलिमिनेट that prune the some branches जो कि हमें इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती. So in during all these course we always try to when we for every new topic, जैसे हम अनइन्फॉर्म से इन्फॉर्म की तरफ आए हैं, मिन मैक्स से हम अल्फा बीटा प्रूनिंग की तरफ आए हैं, for every new topic we are trying to solve our problems in less time or more intelligent way. मीन हमारे पास जो है वो उसको कम से कम टाइम लगे, हमारे पास कुछ ऐसी नोड्स होनी चाहिए जिनको हम उसको एलिमिनेट कर दें. सो ये भी कुछ इसी तरह से कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम, इसके अंदर भी इसी तरह से वी विल अप्लाई सम जनरल पर्पस प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, जनरल पर्पस रूल्स, कॉन्स्टेंट
that will help us to eliminate the large portion of search space. Then हम क्या करेंगे, हम छोटी कोई सर्च स्पेस होगी, हम उसको हम क्या करेंगे, उसको हम विजिट कर लेंगे. So in this video lecture I will talk about the some example जो कि हम उसको सॉल्व भी करेंगे. मैप कलरिंग प्रॉब्लम, उसको हम इस प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे भी, और देखेंगे भी कि हाउ कैन वी अप्लाई द constant on that problem, that example, and we will also discuss the concept of elimination of search जो है वो हमारी search space, किस तरह से हम कुछ nodes को हम eliminate करते हैं. So before going into the detail of constraint specific problem example, so just look at this slide. So we should know about the structure of constraint CSP problems. How can we write our problem? So in constraint specification problem consists of three components. So there are three components, x, d and c. So what is x? X is a set of variables. So set of variables from x1 to xn, and d is a domain, is the set of domain. So this set will also contain the d1 from d2 d3 up to dn, and each x variable have domain d1 in the same way. So this is the corresponding of variable and domain. x1 belongs to the domain d1, and x2 the domain for x2 is d2. In the same way the domain for xn is dn. So d is the set of domain from d1 to dn, one for each variable. जो जिस तरह से मैंने कहा कि x1 की डोमेन हमारे पास d1 है, xn की डोमेन dn है, इस तरह से x2 की डोमेन जो है वो d2 होगी. So C is a set of constant that specify allowable constant of values. So हम इसके अंदर C के साथ हम क्या करते हैं, जो हमारी constant होती है हम उसको लिखते हैं. So just look at this slide. The each domain di consists of set of allowable values. So in d1 हम वो वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे जो कि x1 क्या कर सकता है, अपने अंदर उसको असाइन करवा सकता है. फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 10 तक है, तो हम 10 तक उसकी वैल्यू इस तरह से d1 के अंदर इस तरह से लिख देंगे. सो अलाउएबल वैल्यूज v1 up to vk for variable xi will be our domain di. So values, so these values are finite and discrete in our case. So हम हमेशा क्या करेंगे, इनको finite और discrete के तौर पर लेंगे. So in the same way the constant ci consists of pair, scope and relationship. So what is the scope? हमेशा हम अपनी constraint को जो है ना वो इस तरह से लिखेंगे. So which is the scope and relationship. So where the scope is a tuple of variables that participate in the constraint. So हमारे पास जो है वो tuple किस चीज़ को कहते हैं, रो को कह लें या multiple variables को कह लें. हमारे पास variables की multiple list जो होती है उसको tuple कहते हैं. So the scope is the tuple of variables that participate in constraint. So relationship is a relationship that defines the values that those variable can take one. So कि हमारे पास वो variable जो है वो कौन सी values ले सकता है. So to understand the concept of this constraint, that how can we write the scope and relationship. So just look at this example कि इसके साथ हम अपने scope को और इस relationship को मज़ीद अच्छे तरीके से understand कर सकते हैं. That how can we write this pair in the same way. उसकी पूरी problem की जो understanding है वो हमारे पास ये वाली इस तरह से हमारे पास हमारे पास सामने आ जाएगी. So here is the example that if two variable x1 and x2, so both have the domain AB, mean के we can assign value A to x1, in the same way we can assign the value B to x1. So but यहाँ पे constant क्या है, then the constant saying that saying the two variables must have different values. So ये different values मतलब if we assign the value A to B x1,
then we cannot assign the value a to x2. so लेकिन अब b x2 को क्या असाइन कर सकते हैं हम, we can assign the value b. यहाँ पे हमारे पास अगेन इस प्रॉब्लम को देखें कि if x1 and x2 both have the domain ab, then the constant saying that two variable must have different values can be written as, so we can written this example. so इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हम अपने हमारी constant को. so here is the variable, in the same way here is the scope. The tuple of variables, there are two variables. so हमारे पास यहाँ पे number of variables दो हैं जो कि a b है, x1 and x2 है. so here is the scope. I write the scope over here, then we should write relationship over here, then comma, the relationship is here, mean ke if x1 take a, then x2 will pick the value b. In the same way, if x1 pick the value b, so then x2 will pick a. तो ये यहाँ पे कहीं पे भी a कोमा b, a कोमा a नहीं है, b कोमा b नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट हमेशा लेगा वो. इन द सेम वे वी कैन आल्सो राइट आवर कांस्टेंट इन दिस वे दैट x1 x2 here is the scope and the relationship is here that x1 is not equal to x2. तो इस तरह से हम अपने जो है वो रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर सकते हैं. सो a relationship can be represented as an explicit list of all tuples of values that specify the constant. मीन कि हम explicitly भी इस तरह से लिख सकते हैं जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने हमारे इस रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. explicitly रिलेशनशिप हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. so just look at this point again that a relationship can be represented as explicit list of all tuples of values that satisfy the constant. कि हमारे पास जो values satisfy करती हैं उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. so here is the example map coloring problem. so I will solve this problem by using the CSP. so what is the problem? so just look at this statement that we are looking at map of Australia showing each of its state or territories. We are given the task of coloring each region either red, green or blue. so there are three colors. so the constant is here. so this is a very interesting problem that we are moving towards the that we should color each state or territory with single color. Each color, so there are three colors, red, green and blue, in such a way that no neighboring region have the same color. कि हमारे पास कोई भी जो दो नेबर नोड्स हैं, नेबर रीजन्स हैं, वो क्या होने चाहिए, हमारे पास उसको उनके दोनों के सेम कलर नहीं होने चाहिए. so here is the map. there are 6 states: Western Australia, North Territory, South Australia, Queensland and New South Wales, so Victoria. so there are 6 states. so just I write the this map in the form of a tree. so I always write our problem in the form of a graph, or we can write this graph in the way of tree. so हमेशा हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को ग्राफ की फॉर्म में या फिर हम क्या करते हैं, हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें. so WA, so this node mean this territory directly connected to these two states. so just I write this node, this represent the Western Australia. so this state is directly connected to NT, North Territory, and South Territory, SA. in the same way the SA is directly connected to North Territory, Queensland, NSW, so V. so this SA is directly connected to SAQ, NSW and V. so जिस तरह से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैंने भी उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिए, एजेस लगा दिए. so edge represent the connection between these two
territories. So these two states, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, Q and W and SW के दरमियान में एज मौजूद है. It means कि these two states are directly connected to each other. So these two are neighboring states. So our constraint is there are no two neighboring states have same color. So these two states must have the different color. So इसको हमने किस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो जिस तरह से हम पुराने पैटर्न के थ्रू हम सॉल्व करते आए हैं, अगर उसको हम देखें तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ज़रा गैस करें, वीडियो को पॉज करें और सोचें कि हमारे पास 3 कलर हैं, 6 स्टेट्स हैं. सो हाउ कैन वी मार्क द कलर ऑन दीज स्टेट्स दैट द नो नेबरिंग स्टेट्स neighboring region have the same color. किस तरह से होगा, ज़रा गेस कीजिएगा इसको. So just look at the slide, the formulation of this problem, the map coloring problem as CSP, constraint specific problem. So there are 3 components as we discussed in our previous slides. So there are 3 components, X, D and C. X are variables, D is domain and C is constant. So and here is the variable. So there are 6 states. So I write the 6 states or 6 regions in this set. So there are 6 values in variable X set. The domain. So the domain the domain of each variable is a set of DI. So here is the domain, red, green, blue. So every domain, every variable of this set can take one value from this this set. So that's why this is our domain. The constraint, so constraint require the neighboring region to have distinct color. So since there are 9 places where the region borders, so जहाँ पे हमारे पास 9 जो है वो region है जहाँ पे borders आते हैं. So there are 9 constant mean कि यहाँ पे SA, the color of SA is not equal to WA, CA is not equal to NT. So ये हमने क्या किया, उस 9 जो चीज़ें थी उसको हमने किस तरह से constraint की फॉर्म में लिख दिया. तो ये हमने किस तरह से लिखा, जिस तरह से ये लास्ट पे कहा गया कि relationship can be represented as an explicit list of a tuple of values that satisfy the constraint. So मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इस तरह से इस फॉर्म के अंदर लिख दिया जो कि मेरे पास constraint को satisfy करती है. So the map coloring, so just look at this slide. Here we are using the abbreviation that SA is not equal to WA is a shortcut of for this. So ये हमारे पास जो जिस तरह से constraint हमने बताई थी कि इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि SA से there are variable means scope and here is the relationship mean कि ये 2 variable हैं और इनका color जो है वो दोनों का एक जैसा नहीं हो सकता. So where SA and WA can be fully enumerated in turn as mean के यहाँ पे हम किस तरह से उसको कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेड आएगा तो ग्रीन नहीं आ सकता उसको, मतलब एक अगर एक रेड लेगा तो दूसरा ग्रीन पिक करेगा. If SA pick the red color then WA can pick the blue color. In the same way the if SA pick the green color then WA can pick the red color. So in the same way सारे के सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं. कोई भी एक जगह पे भी मेरे पास क्या है AB, जिस तरह से हमने पहले एग्जांपल देखी थी यहाँ पे रेड नहीं है. क्यों? क्योंकि SA एंड WA दोनों सेम कलर नहीं हो सकते. So just I write this the map coloring problem in the form of constraint. जिस तरह से हमने ये इसके एग्जांपल को सॉल्व किया. So there are these variable and we write the constant in this form. So I write the map coloring problem in this form. So यहाँ पे मैं कुछ solution discuss करता हूँ. तो the solution is there are many possible solution to solve this problem. So यहाँ पे एक solution यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, ये propose किया कि WA is red and NT have we mark the NT state as green, Q red
NSW with green color, we mark this state as red color. So we just so यहाँ पे मैंने क्या किया, we have chosen SA is equal to blue. None of the 5 neighboring variables can take one value जो मैंने accept. None of the 5 neighboring variable can take on the value of blue. कोई भी उसका 5 जो उसके neighboring है वो कभी भी जो है वो blue नहीं ले सकते. जस्ट ये SA जो है उसने blue को पिक कर लिया, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस के मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको blue पिक कर लिया. अब ये वाला जो एक स्टेट है ये सब के साथ कनेक्टेड है, तो ये कोई भी स्टेट क्या है कि none of these 5 neighboring cannot take the blue color. सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने इस तरह से इसको डिफरेंट कलर के साथ हर स्टेट को मार्क कर दिया. So here are some advantages of CSPs. The CSP solver can be faster than state space searchers, because the CSP solver can quickly eliminate large searches of the search space. मीन के वो मल्टीपल जो हमने switches लेने होते हैं, पैटर्न्स लेने होते हैं, पैटर्न्स में से उसको फिर आइडेंटिफाई करना होता है, बहुत सारे वो उनको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है जस्ट एक कांस्टेंट लगा के. सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट विदाउट taking the advantage of constraint propagation, a search procedure would have to consider 3 raised to power 5 mean 243 assignments for the 5 neighboring variables. So there are 3 colors and 5 neighbors. So यहाँ पे total number of states मेरे पास कितनी जनरेट होंगी, 243. ये इस तरह से जिस तरह से हम पहले इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते आ रहे हैं. बट व्हेन वी अप्लाई द कांस्टेंट जैसे हमने अप्लाई की तो क्या किया, एक कलर को हमने फिक्स कर दिया SA के ऊपर कि वो ब्लू कलर जो है वो स्टेट उसका होगा. तो बाकी कितने कलर रह गए हमारे पास, बाकी हमारे पास 2 रह गए. सो विद द कांस्टेंट प्रोपेगेशन we never have to consider blue as a value because we fixed that value for SA. So we have only 2 raised to power 5 which is equal to 32 assignments to look at. तो हमारे पास 32 different combination बन जाएंगे, different possible solutions, possible states बन जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, उसमें से हम अपने गोल को आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये टोटल रिडक्शन कितनी हुई है, 87% लेस काम करना पड़ा उसको CSP को. इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप you enjoy this video lecture. If you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.